Hello guys, welcome back to my channel. My channel finally has 100 subscribers. Congratulations to me. So this video is about the last episode of winter series. ये लिप शेड मुझे मैंने शेड आज ही ट्राई किया है बट इट इज़ गिविंग सम फंकी लुक्स. दैट्स फाइन. इसे बहुत फंकी लग रहा है. यार एक कैमरा में ही कुछ अलग दिखता है. Yes, welcome back to my winter series episode 4 and probably it will be the last one. यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक एक टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ. Here I will be talking about multiple things which you can take care of, like skin and hair both. The things which I am going to share here are very tiny but they are really impactful if you do it. So in इस winters में there are basic things which we can do to improve our skin texture and hair texture. तो skin में first point is switch to a cream based cleanser instead of using that foaming or gel based cleanser, क्योंकि dryness needs that creamy based moisture to settle down the dead skin. So instead of using foaming or gel based cleansers, try to use cream based cleansers. So second point is try to apply moisturizer on your dump face. So उससे क्या होता है, moisturizer locks in very nicely, like 10x better than the normal one. The third point is how important vitamin E plays in your skincare routine. So ये बस winters के लिए नहीं बोल रही हूँ. It is also like for your daily routine. You should add vitamin E serum होने दो या फिर anything in your skincare. You should add vitamin E content in your skincare routine, which is very very mandatory to fix your wrinkles, to fix your skin texture and to brighten your skin. So winters में तो obviously it will help you, and साथ में for everyday use you should include vitamin E in your routine. ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि avoid hot waters and exfoliate once a week. सो दैट्स इट. इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया है इस पर, एंड वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ही है कि क्यों हॉट वाटर अवॉइड करना है. इट स्ट्रिप्स ऑफ योर नरिशमेंट फ्रॉम योर बॉडी एंड स्किन. So another point is I have bought my pillowcase to show you that you should sleep on satin pillowcase to reduce dryness, to reduce that friction that happens when you sleep overnight. So this is my satin pillowcase. Helps you to keep your skin clean. Once you get it, now you can't get rid of this pillowcase, so get it soon. You can get it like if you want a link कि कहाँ से लेना है वगैरह. तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था. इट इज़ समथिंग फॉर 500 2 pillowcases and 3 scrunchies with it. फ्री में मिले थे. तो yeah, this is a very useful mandatory shopping you will be doing. The last point about skin is जो मैंने पूरा बड़ा वीडियो बनाया था लिप केयर पे, तो I'll repeat the same again, that apply lip balm before you go to sleep, and especially apply those lip balms which contain ceramides. So what exactly ceramides do is it acts like a glue. मतलब it holds your skin cells together, forming a protective barrier and which locks in moisture easily. So ceramides contain this
kind of features in it, so it is very mandatory to look after ceramides contain in it. Okay, these were the skincare routine for winters, like what things you should add and what things you should avoid. So now we'll move forward to hair. Equally, I have 6 points for hair too. So first point is, guess what? Exactly, oiling. Oiling once a week. So again, ये बस winters के लिए नहीं है, ये लाइक एवरीडे यूज़ के लिए है कि एवरी वंस अ वीक ऑयलिंग करना ही चाहिए. आई नो यू विल नॉट गेट दैट इनफ टाइम टू ऑयल योर हेयर एंड ऑयल योर हेयर बिफोर एंड यू आप प्लान करते रहते हो कि इस रात में लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, बट वो होता नहीं है. बट गाइज इट लिटरली टेक्स 2 to 3 minutes to apply a proper oil to your scalp. So do it. So some of people I have seen, they don't condition their hair. They are like कि यार ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, it just frizzy होता है एंड दूसरे तीसरे दिन अच्छे दिखने लगते हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. विंटर्स में नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है एंड यू हैव टू अप्लाई एट लीस्ट अ लिटिल पोर्शन ऑफ कंडीशनर. सो ये पॉइंट आपने कहीं सुना नहीं होगा या फिर पता नहीं, सुन के इग्नोर कर रहे हो. तो यू शुड यूज़ अ कॉटन टी शर्ट. ठीक है, यू शुड यूज़ अ कॉटन टी शर्ट टू ड्राई योर हेयर. It is really very safe to use cotton t-shirt because बाकी के towels, I know they are good quality and good everything about it, good fabric and all, but I don't have much explanation for this point, but I personally use that. I use cotton t-shirts to pat dry my hair, so you can try it. So again, pillowcase, satin pillowcase was not only for skin, वो हेयर के लिए भी अप्लाई करता है. तो यू शुड यूज़ सैटिन पिलो केस एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग रबर बैंड्स एंड दैट different kinds of rubber bands, you can use scrunchies which are literally very safe. उसमें बाल नहीं निकल के आते हैं and it is safe for your hair. So again, this points is common, like it's not winter specific hair care. So you have to trim your hair every 2 months, I guess. Yeah, you have to trim at least little bit length of your hair. Like आप इतना इतना भी करोगे ना, दिस इज़ इनफ. यू हैव टू ट्रिम योर हेयर, क्योंकि वो स्पिटन्स होते हैं या फिर बाकी ये चीज़ें वो निकल जाएंगे एंड इट विल गिव यू गुड ग्रोथ आफ्टर द ट्रिमिंग सेशन. पुणे गर्ल्स गोइंग आउट विदाउट अ स्कार्फ इज़ अ क्राइम. बोलना यही है कि वी डोंट यूजुअली गो आउट विदाउट आर स्कार्फ्स, बट बॉयज़ do use scarf. No, to use your caps or whatever you are comfortable with wearing, the helmet caps or the normal face masks. बाहर बहुत डस्ट है and it naturally damages your hair very easily. So girls, compulsorily tie your scarves, and boys wear masks and mask नहीं, wear hair masks. These were the points which जो मैंने निकाल के रखे थे अबाउट स्किन एंड हेयर फॉर दिस विंटर्स. एंड ये पॉइंट्स ऐसे नहीं कि बस विंटर्स में ही करना चाहिए. इट इज़ फॉर लाइक योर रेगुलर स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन टू. तो यू कैन ट्राई दिस every single day. You can do this every single day. तो yeah, this will be my last winter's episode because हो गया जो इम्पोर्टेंट मुझे बोलना था कि ठंडी में ये करना चाहिए, विंटर्स में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. दीज वर द ओनली थिंग्स which were mandatory. And yeah, thank you so much for watching my all the episodes. This will be, I guess, 4th episode.
So yes, I would like to end this episode over here. Now I'll be focusing on makeup, uh, makeup shoots and makeup things. This was all about beauty, hair care, skincare thing. So yes, thank you so much. Thank you so much for watching this video. Okay, bye. Hope you like it. Hope you enjoy my videos. Okay, bye.